गाइस अभी अभी हमारे पास नोटिस नहीं, आपको बताने के लिए एक इन्फॉर्मेशन आई है। जैसे कि हमारे है बाबा का बर्थडे, हमारे हनुमान जी का बर्थडे, हमारे बाबा का बर्थडे, तो हमने सोचा कि प्यारी सी पेंटिंग बनाई जाए। तो पेंटिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक किताब, जो किताब में हो पन्ना, बस फिर क्या है, एक चाहिए होगी ब्रश और राधा नाम काउंटर, क्योंकि जपते जपते बाबा का नाम बना देंगे। इतनी प्यारी सी दुकान बोलो, इतनी प्यारी पेंटिंग, जो पेंटिंग देख के आप बोलोगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नाम लेके करते हैं चालू। आपको कैसी लगी जरूर बताना मेरे भाई लोगों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी चलो करते हैं स्टार्ट। हम पहले करेंगे ये वाली रेफरेंस, तो आपको पता ही होगा। Strong and true, these memories reside, built with a gentle hue. We're feeling softly glide, a corridor leads to a room unseen, a sanctuary soul, where quiet moments convene. On foundations deeply laid, these fragile structures stand. No single brick has swayed, crafted by unseen hand. Leads to a room unseen, a sanctuary soul, where quiet moments convene. These blueprints of the heart, emotions archway bright, each feeling a new start, constructed in the light, a
मेरी भक्ति देखते हुए और मेरा पेशेंस देखते हुए आपको पेंटिंग कैसी लगी जरूर बताना, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने पेंटिंग में कभी की नहीं थी। 3-4 दिन लग चुके हैं मुझे इस पेंटिंग को बनाने में। उसका बैकग्राउंड में मैंने इतना प्यारा तरीके से प्रिपेयर किया है। आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये पेंटिंग आपके भक्तों के लिए है जो हनुमान जी को इतना मानते और राम जी को इतना मानते। क्योंकि भाई मुझे बनाना था कि बाबा का बर्थडे है, उस दिन मनाऊंगा, बट मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो सकता है, 1 या 2 दिन का हो गया होगा, मुझे पता नहीं, बट मेक श्योर फॉलो इट गाइस।